अस्सलाम वालेकुम। आज बैम टेलीविज़न की तरफ से मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान की एक हेरिटेज आइकॉन मोहाटा पैलेस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक पे मेरे मोहाटा पैलेस की बिल्डिंग है और आज जो मोहाटा पैलेस पे हो रहा है एक ज़बरदस्त किस्म का कन्वर्जेशन। और ये कन्वर्जेशन हो रहा है विद तारिक अलेक्जेंडर कैसर के साथ। तारिक अलेक्जेंडर कैसर जो पाकिस्तान के एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और इन्होंने जो इनका जो रिसर्च एरिया है वो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, आप कह लें कि जी आइलैंड्स, मैंग्रोव्स आइलैंड्स और अब इंडस डेल्टा पे आज बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, आज का एपिसोड बड़ा मेस्मराइजिंग होने वाला है क्योंकि ना सिर्फ हम तारिक अलेक्जेंडर की कन्वर्सेशन में आप लोगों को शामिल करेंगे बल्कि साथ साथ हम मोहाटा पैलेस से कुछ दरो दीवार भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक अलेक्जेंडर कैसर। हम तारिक साहब से बात करते हैं कि जी आज का जो सेशन है उसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे और आज इंडस डेल्टा के हवाले से जो रिसर्च वर्क या जो उनकी जो वर्किंग है वो किस तरह से आज हमें शेयर कर रहे हैं। सर आज यहाँ पर इंडस डेल्टा के हवाले से आप कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ रिसर्च, कुछ मूवीज़, कुछ समथिंग शेयर करने वाले हैं, कुछ बताएंगे इस हवाले से। मैं पिछले 15 साल से करंगी क्रीक के मैंग्रोव और उनके जजीरों पे जाता रहा हूँ। शुरू में तफरी थी, बाद में फोटोग्राफी की, फिर मैं पॉलिसी बनाई, दिक्कत की थोड़ी सी, फिर एहसास हुआ कि ये जंगल कट रहे हैं और ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। तो उस पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि लोगों को जानना चाहिए, उनको पहचान होनी चाहिए कि कराची के करीब इतने खूबसूरत, इतने घने, इतने आला कुदरती ज़ख़ीरे हैं, इतने जंगलात हैं जो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको बचाने को। तो कुदरती ज़ख़ीरे बनाना कराची के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। आज आपको ये वीडियो में मैं ये मौज़ूआत बता रहा हूँ रखते हैं और इनके लिए क्या है। तो ये काफ़ी सालों से इस पर लगा हुआ हूँ, बोलता हूँ, किताबें लिखता हूँ, कभी कभी आर्टिकल लिख जाता हूँ, मगर अहमियत जो है वो हमारे नौजवानों को और हमारी उम्र के लोगों को एहसास हो कि खुदा की हरकतें ज़्यादा होके पड़ी, तो उनको बचा के रखना ज़रूरी है, लाजम है। पर अब आगे हम चलते हैं मोहाटा पैलेस की तरफ और मोहाटा पैलेस यानी कि वो अब मोहाटा पैलेस हो गया है और इसका इंटीरियर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो अलाउ नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर जो है दरो दीवार वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ।
and the shores of our habitation, and the inhabitants that form this ecosystem. The ecosystem is part of us as humans, and our relationships are exploitative and symbiotic. Yes, they are symbiotic. This is Ibrahim Hedri, and our urban shores are stressed. It was there to that intensity. And 2016, I witnessed it being cut. I was there when the woodcutter's water bottle was still lying, leaning against a tree, and the sawdust was on the mud. The tide had not had enough time to change. So I was there within 6 hours of that thing being cut. And I went home and I told my wife, I said, I can't go in anymore. Because previously I'd said that when they cut this tree, I would stop. And for 6 months I could not get on a boat and go into that forest. I started again, and the mission was important. The mission was important to communicate. It's difficult to stop the desire for profit, even if it's 20 rupees a kilo for this wood. This wood is 20 rupees a kilo. So the exploration and the expression of what I feel was very important to be communicated, and I hope I have done that to a certain degree. I thank you all for being here because it's important. And it's 20 rupees a kilo, but for a poor person in the Delta, I mean, they need firewood. They don't have gas. They don't have electricity. How do they cook? So, these are serious problems, and there are real problems that are faced by the fishermen who are the poorest of the poor. a friend of mine went into the mangroves of the boat club, and while he was on his boat, he discovered the woodcutters cutting, and he challenged them. And they turned around and said, "What can I do? I owe someone a lot of money. And yes, I don't earn anything much of it, but I have to pay off my loan, so I have to bring home a certain amount of wood on a regular basis." So he and his sons go in there, and it's the same. It's the same scenario for for the kilns, for the brick makers. These are existential and very serious issues that need to be addressed in our communities, in our societies, in our governments. So yes, it is not the woodcutters who are taking this for profit. No, it's not just the woodcutters, but you also have developers, and there are whole parts of the mangroves that have been destroyed completely for development. I mean, I know that the entire area along Karachi was mangroves, and now it's apparently a KBT colony, supposedly supposed to be one. And the mangroves keep fighting their way through the reclaimed soil, and keep popping up. But that entire area was mangroves, and I remember maybe 30 years ago driving down there, and there were flamingos there and all kinds of birds. So, these things do matter, and I think sadly we tend to forget that. A renaissance man. How can we possibly thank you? Thank you for creating awareness. Thank you for creating visuals that are arresting and can provide inspiration for those who wish to experience it. Thank you very, very much indeed. आज का कंटेंट में आप लोगों ने जो है अलेक्जेंडर कैसर से ना सिर्फ मुलाकात की, उनके वर्क के बारे में जाना, बल्कि मोहाटा पैलेस के भी कुछ दरो दीवार आपने देखे। यकीनन आपको आज का जो एपिसोड है हमारा बैंड का बहुत पसंद आया होगा। और मैं और क्या कह सकता हूँ,
यही कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो और सब्सक्राइब बैम टेलीविज़न ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। अल्लाह हाफ़िज़।